Good morning, student. I am Chinak Sukani from Rockwell BBA College, Vapi, and I am going to teach elements of strategic management subject. And we will continue our first chapter, conceptual framework for strategic management. And today we will learn second term, that is strategy. So first of all, what the term strategy is. Originally, the term strategy has been derived from Greek word strategos, which means art of generalship. That is, what action general of army undertakes. That means what type of action undertaken by head of army. So this is the earlier views from where the term strategy has been derived. Now, in military sense, the term strategy refers to the action that can be taken in the light of action taken by opposite party. That means whatever action taken by one party and in order to offset whatever action taken by opposite party is strategy in military sense. And at first, the term strategy was used in management in terms of military science only, to mean what a manager does to offset actual or potential action of the competitor. Thus, generally, strategies are prepared in order to meet the challenges posed by activities of the competitor, or we can say strategies may be made in the light of the plan of the competitor. So let me take one example. If manager anticipate price cut by competitors, now he may prepare a strategy of launching an advertisement campaign to convince the customers of the superiority of the product. Yeah, that means जो ये टर्म स्ट्रेटेजीज है ओरिजिनली वो मिलिट्री साइंस से आया था. सो मिलिट्री साइंस में स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या हुआ था? वॉट strategy refers to the action that can be taken in the light of action taken by opposite party. So assume there are two party, one party and another is what? Opposite party in military mainly. So military science में strategy means what action taken in the light of action taken by opposite party. Just assume इंडियन आर्मी जो भी एक्शन ले रहा है इन ऑर्डर टू ऑफसेट मतलब दबाने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑफसेट द एक्टिविटीज ऑफ द चाइनीज मिलिट्री. ओके, सो स्ट्रेटेजी मिलिट्री साइंस में स्ट्रेटेजी का टर्म क्या था? एक पार्टी क्या एक्शन लेती है इन ऑर्डर टू ऑफसेट द एक्शन टेकन बाय द अपोजिट पार्टी. और एंड जो ये टर्म स्ट्रेटेजीज है वो मैनेजमेंट में भी वही मिलिट्री साइंस में जो वर्ड यूज़ हुआ था वैसे ही यूज़ हुआ. मीन्स व्हाट अ मैनेजर डज टू ऑफसेट एक्चुअल और पोटेंशियल एक्शन ऑफ द कंपटीटर. एज्यूम मेरी कंपनी का मैनेजर कौन सा एक्शन ले रहा है इन ऑर्डर टू ऑफसेट मेरे कंपटीटर्स के एक्शन को दबाने के लिए. एज्यूम ये मेरी कंपनी है और एक आपकी कंपनी है. बोथ हमारी कंपनी जो है ना, हम लोग कंपटीटर से विथ ईच अदर. सो मेरे कंपनी का मैनेजर कौन सा एक्शन ले रहा है इन ऑर्डर टू ऑफसेट आपकी कंपनी के एक्शन को दबाने के लिए. क्लियर? सो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी कंपनी का मैनेजर एंटीसिपेट कर रहा है और सोच रहा है कि मेरा कंपटीटर ने प्राइस कट किया, अभी मैं ये सेम एक्टिविटी करूँ प्राइस कट तो वो इमिटेशन हो जाएगा, कॉपी के ऐसा हो जाएगा. तो मेरी कंपनी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाया? लॉन्चिंग ऑफ न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन विच कन्विंस द कस्टमर ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यानी मेरी कंपनी के मैनेजर ने नया एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया एज अ स्ट्रेटेजी, और वो एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर को कन्विंस किया
कि our product is much more superior as compared to the competitor. क्लियर. सो मैनेजमेंट में भी मीनिंग सेम ही हुआ कि व्हाट अ मैनेजर डज टू ऑफसेट एक्चुअल और पोटेंशियल एक्शन ऑफ कंपिटिटर्स. इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रेटजीज आर जनरली प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंजेस पॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ कंपिटिटर. बट रिमेंबर, in management, the term strategy cannot be used in military sense as business is not always like a war situation. Some companies adopt a strategy which makes competition irrelevant or keep our business one step ahead of the competitors. Clear? Now next, very important, in the context of management, various writers have take different view of the strategy. So first view is given by Professor Chandler. So according to Chandler, what is strategy? So these are the certain definition. Strategy is determination of the basic long-term goals and objective of the enterprise and adoption of the course of action and allocation of resources necessary for carrying out this goal. So according to this definition, there are three type of actions involved in strategy. So first action is what? Determination of basic long-term goals and objective. Second action, adoption of courses of action. Third, allocation of resources. So just explain with the help of example. Determination of long-term goals and objective. So example, our company's long-term goal and objective is to growth up business. Now for that, adoption of courses of action. Now in order to achieve the growth, क्या क्या actions लेने पड़ेंगे? That is adoption of courses of action. We require manpower, machinery, material, money, capital, हर एक चाहिए. So there is adoption of courses of action. And then after, allocation of resources. We have to allocate man, machine, material in order to carrying out this objective. और हमारा objective क्या था? In order to growth. So growth करना है, so उसके लिए certain courses of action adopt करना है, then resources को allocate करना है so that we can achieve our objective. That is strategy. So strategy involves three action: determination of basic long-term goals and objective, adoption of courses of action, and allocation of resources which is necessary for carrying out this goal. This views given by Professor Chandler. Next views given by Stanford Research Institute USA. A strategy is a way in which firm reacting to its environment deploy its principal resources and marshal its main effort in pursuit of its purpose. Now according to this definition, strategy is way in which firm reacting to its environment. So here environment consists of both, that is internal as well as external environment. Okay, now internal यानी within the organization and external which affect from the outside. So firm always reacting to its environment और वो analyze करेगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है और आउटसाइडर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है. सो फर्म ऑलवेज रिएक्टिंग टू इट्स एनवायरमेंट, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. देन डिप्लॉय इट्स प्रिंसिपल रिसोर्सेस. डिप्लॉय मीन्स व्हाट? एक्सटेंड करना, बढ़ाना, दैट इज डिप्लॉय द प्रिंसिपल रिसोर्सेस. एक्सटेंड करो, बढ़ाओ वेरियस रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मशीन, मटीरियल, मनी एंड सो ऑन. And then with the help of managers effort. Now marshal is here. Marshal जो मिलिट्री में हेड होता है उसको मार्शल बोलते हैं. सो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हेड है, मैनेजर एज्यूम करें. सो विद द हेल्प ऑफ मैनेजर्स एफर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. So according to Stanford Research Institute, strategy is what? Way in which firm relate with environment, that is internal, external, then increase their main resources in terms of man, machine, material, money, and then
with the help of managers' efforts, the organization is able to achieve the purpose, that is objective. Now next view is given by Professor Michael Porter. Strategy as creation of unique and value positions involving different set of activity, and thus company that is strategically positioned perform different set of activity from its rival or perform similar activities in different way. So according to this definition, strategy is creation of unique position. Unique means what? The which is different from its competitors, and thus company perform different activity from its competitors or perform similar activities in different way. So strategy is what? We have to create unique position and perform whatever activity it is different from the competitors. And we always see in advertisement, for example in case of toothpaste, HUL and the Colgate. So assume कि क्लोजअप वाला जो भी एडवर्टाइजमेंट में कुछ लाएगा उसको ऑफसेट करने के लिए उसका जो कंपटीटर्स है कोलगेट वो कुछ और नया एक्टिविटी लाएगा. सो वी हैव टू क्रिएट यूनिक पोजीशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपटीटर. दिस व्यू इज गिवन बाय प्रोफेसर माइकल पॉटर. And this is a general definition. A strategy is a long-term course of action through which organization relate itself with the environment so as to achieve the objective. So strategy is what? Long-term course of action. An organization always relate itself with the environment because organization is a social system and operate within the environment. And environment always affect organization activity. So organization always relate itself with the environment. So your environment clear na? That is internal or mainly external. That is competition, political and legal, technological, cultural, etc. ओके. एंड इंटरनल यानी हमारी ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, ये सबको देखना है. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रिलेट विद द एनवायरमेंट सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. Now based on this various definition, features of strategies can be identified. So first feature, strategy is a major course of action. So it is what? It is a major course of action through which organization try to relate itself with the environment, that is internal as well as external, then develop certain advantage which help in achieving organizational objective, which help in achieving the objective. So strategy is what? Major course of action. An organization always relate करेगा environment के साथ, develop करेगा certain competitive advantage which help in achieving organizational objective. Second feature, strategy is a relative combination of action. Relative means what? It is not individual action but it is a combination of action. Because जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेगा दे हैव टू एनालाइज इच एंड एवरी फैक्टर्स, दैट इज इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर, यानी उसको आउटसाइड फैक्टर्स को भी देखना है और इंटरनल को देखना है. सो इट इज़ अ रिलेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन विच एम टू मीट पर्टिकुलर कंडीशन, to solve certain problem or to achieve a desired end, that is desired result. Third, strategy may even involve contradictory action. Now here contradictory says it is not true, that is it indicate negative action. So sometime, not always, sometime strategy may even involve contradictory action. Let one example, टू परस्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करना है ना. ग्रोथ सिंपल टर्म है जो हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ग्रोथ सिंपल टर्म है. ग्रो मतलब इंक्रीज करना, एक्सपांशन करना. सो ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किया, बट समटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सपोज मल्टीपल बिजनेस है, मल्टी डिवीजन प्लांट है. सो ऑर्गेनाइजेशन मे सेल सम ऑफ द बिजनेस वाइल एक्सपांडिंग अदर बिजनेस. सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने के लिए एक बाजू दूसरे बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए अनदर बिजनेस विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, विच इज़ नॉट रनिंग वेल, उसको सेल कर रहा है. सो एक बाजू कट भी कर रहा है और एक बाजू एक्सपांशन भी कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी sometime organization may sell some of the business while expanding other businesses. That is why we can say some strategy may even involve contradictory action.
And last, strategy is a forward looking. Forward matlab future. That is, it has orientation towards future. This is because strategic action is required in a new situation, and no new situation requiring solution can exist in the past, and therefore strategy is relevant to future. So strategy is always forward looking. फॉरवर्ड यानी फ्यूचर के बेस पे बनता है. बिकॉज स्ट्रेटेजिक एक्शन जनरली क्यों रिक्वायर्ड है? कोई न्यू सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. एंड कोई भी नया सिचुएशन का पास्ट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है. दैट इज वाई स्ट्रेटेजी इज व्हाट रेलिवेंट टू फ्यूचर. सो these are the features we can identify based on various definition. Thank you, student. Now in next class we will learn the differentiate between policy and strategy. Thank you.